Good evening, dear friends. My name is Dinesh, and I am a director of Tripura People Foundation. Today, I have come here at Navish HR to meet the students of Tripura, or say the first three candidates of Tripura in Navish HR office who are getting trained in the Japanese language at this point. I believe you guys might have seen about with the press conference of which Maharaja has introduced Navish HR to Tripuri people in Tripura last week. Regarding the same thing, I have come here to meet the first three candidates who have already started their classes, taking training on the Japanese language, and I believe they have already learned somewhat in the Japanese language to introduce themselves at least. So I would want, first of all, before we start the conversation, I would want to show you a showcase about the learnings that they have learned, or about the things that they have learned. Would want your good name? I missed your name. रिया रिया दास रिया दास। तो हमारे साथ रिया दास है, नाम क्या था? सागरजीत त्रिपुरा है और जानस जमातिया है। तो ये तीनों पहला हमारा कैंडिडेट रहा है त्रिपुरा से जापानीज एचआर के साथ जुड़े हुए पहला 3 व्यक्ति जिन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया जापान में जाके नर्सिंग का जॉब करने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि रिया दास आप थोड़ा अपना डेमो दिखाएं कि आज तक आपने क्या सीखे हैं। पहले आप जापानीज में बोलिए, उसके बाद आप बंगाली में बोलना चाहते हैं तो प्लीज बोल दीजिए। हाँ, बैठे बैठे बोलो, बैठे बैठे आराम से बोलो। ओके हाजी मेमाशिते रियातो मोशिमास दोजो योशिको ओनेगाइशिमास नमस्कार আমার নাম রিয়া দাস हाँ, the same thing that you have told in Japanese now, similar thing you can repeat in Bengali, no? Please. It's like she have become expert in Japanese than Bengali. She forgot the Bengali language and she's like, okay. Go ahead, please. হাজি মেমাশিতে রিয়াতো মোশিমাস দোজো ইয়োশিকো ওনেগাইশিমাস নমস্কার আমার নাম রিয়া দাস এবং আমি তোমাদের সাথে দেখা করে অনেক ভালো লাগছে। ঠিক আছে, you say okay. Next we'll go on how we go. So please take your time. 하지미마스테 사고지토 모시마스 조조이레시코 오네가이시마스 저토노 콜롬카 아니몽카 사고짓 앙타보 나비스 에사르 포리 동어 Japanese language training class 동어 아자가 스랑가이 동어 하지미마스테 저나스토 모시마스 도조 요로시코 오네가이시마스 콜롬카 저토노 anibamung Jonas Zomatia ang Tripurani kaisa borot ang tabok Bangalore Navish HR Japanese language training ibangai 6 month ibangai Pfizer tabo ambai. Thank you. Your name? Kannadiga? Namaskara. So ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ದಿನೇಶ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ फिर ये कर्नाटका है। कर्नाटका में हम पिछले 17 साल से from last 17 years. So I don't talk much of the Kannada, but somewhat I try to manage of the things because I have to survive here, which is why I have also learned some part of it to manage. So similarly, these guys are going to Japan and they will also have to learn some languages, which is, I just want to give an example why me being a Tripuri guy came to Karnataka and had to speak in Kannada. Let's say, Namaskara, Nam Hesru Dinesh Anta. I mean, that's just normal word that we speak, like how they have introduced about the, in Japanese language about themselves. So that's a basic thing that everybody should, I think, should be, learning it. Yes. So, what I do is, when I stay in a place, there's a local language where so that we can communicate and we can feel that we are not outside. Yes. If we learn the local language, we feel that we are here. Yeah, and even the local people accept in that way. As per my experience, now I'm just giving an example because as per my experience, अब तक ऑटो वाले से अगर मैं कन्नड़ में थोड़ा भी बात कर ले, नेगोशिएशन ना 50 रुपए की जगह 40 रुपए हो जाते हैं हमारे भाड़ा। क्यों? बिकॉज दे आर लाइक मोर इम्प्रेस्ड कि यार you came to Karnataka and you are talking our language is what impressed them.
Similarly, if you go to Japan, you talk in Japanese, you look might be different. I mean, they will be able to identify that you are not a Japanese. But when you talk in Japanese, they will be really happy. That's how we build communications. That's how we build relationships. Now, some people are very ignorant. Say, why should I learn? It's not my even mother tongue, and I don't need to. I can survive with Hindi, with English. करके लोग बोलते हैं, which is okay. You can survive. It's not that you cannot survive, but what we have to do is respect the place where we go, and that's how we have to think of learning things. Now, many people has asked me, saying, can we go without taking the Japanese language training? Can we survive with English in Japan? I'm like, you can survive, but how will you communicate? Because many of them will not be talking in English. And even if they talk in English, you might not even understand because their accent is completely different. Then there will be a miscommunication, which is why this training is happening today. Many people have asked why are they taking 6 months to train and send to Japan. Now my point was, without learning and Japanese language is something different, totally different from us, which will take 6 months is also not enough for you to learn. Like even me staying in Karnataka for 15, 17 years, I couldn't learn the whole, complete Kannada, but yes, salpa, that's it, and manageable. So, coming to the point, thanks for joining us here from Navish HR side. Really happy that at least 3 of our candidates could join your Navish HR team to go to Japan for a job in Japan for assistant nurse for now. The first 3 students, first of all, this guy was the one who came in, as I introduced, and she came along with him. And third, he came, and we are planning to get in more students from Tripura to join Navish HR and send them abroad in Japan to work. I just wanted to understand their experience so far. How did you get to know and what motivated you to come and join Japanese HR today? And I want you to say in Bengali. I cannot ask you in Bengali because I am not expert in Bengali. Jani, Bangla jani, to wo bisi clearly pari na. Come on, बोलते पारो? एक तो बोले सुनाओ, like what impressed you? आपको ये क्या लगा, क्यों लगा और क्यों आया? क्या सोच के आया? প্রথমত এটা একটা একটু পাশ নিয়ে যাও। প্রথমত এটা 6 মান্থের কোর্স, অনেকটা শর্ট টাইমে আমি শিখতে পারবো, চান্স পেয়ে গেছি, এটা ভালো একটা অপরচুনিটি। আর এটা থেকে আমাদের পিজি এগুলো সবকিছু প্রোভাইড করছে, আর জাপানিজ টিচাররা অনেক ভালো, ওরা খুব ভালো পড়াচ্ছে, সেজন্য অনেকটাই ভালো লাগছে। আর ये तो आपने अभी जो ज्वाइन करने की बात बोले हैं, मेरा क्वेश्चन था कि आपने क्या सोच के जापानीज एचआर ज्वाइन किया? जापानीज ये जो नाविश एचआर जो है, नाविश एचआर को आके ज्वाइन किया आपने आज, क्या सोच के ज्वाइन किया, कहाँ से सुना और कैसे पता चला कि नाविश एचआर में ये अपॉर्चुनिटी है? আচ্ছা, আসলে এটা আমার ফ্রেন্ডের থেকে শুনেছি। ওরাই আমাকে জানিয়েছিল যে তুই যাবি কিনা, ইন্টারেস্ট আছিস কিনা। আমি বললাম ঠিক আছে, আমি ট্রাই করে দেখি। তারপর আমি আসলাম, ইন্টারভিউ দিলাম, খুব ভালো লাগলো তাদের ইন্টারভিউ দিয়ে। তারপর ওদের সাথে কথা বলে ভালো লাগলো, ওদের ফেসিলিটি গুলো শুনে ভালো লাগলো, সেজন্য। আর প্রথমত আমার বন্ধুর থেকে কথাটা শুনেছি আমি, সেজন্য ওকে অনেক ধন্যবাদ। धन्यवाद, हाँ, थैंक यू। ओके, सो व्हाट वुड यू वांट टू से बाकी लोग, जैसे कि आपका बहुत सारे और दोस्त होंगे, ये तो आपके एक ही दोस्त है जिन्होंने आपको दिखाया या समझाया है। आप त्रिपुरा में तो आपके बहुत सारे और दोस्त होंगे, उन लोगों को आप क्या बोलना चाहते हैं? उन लोगों के ऊपर आप क्या समझते हो कि वो लोग भी इंटरेस्ट हो सकता है आपकी जैसे? হ্যাঁ, অবশ্যই। কারণ আমরা জাস্ট বিএসসি কমপ্লিট করেছি, তারপর কোনো না কোনো ডিগ্রি নিলে ভালো হয়। তারপর অ্যাব্রোডের জন্য একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাটা অনেক ইম্পর্টেন্ট, কারণ শুধু একটা ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে তুমি চলতে পারবে না। বাইরে যেতে গেলে তাহলে তোমার নিউ ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হবে, আর জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ খুব ইন্টারেস্টিং, শিখে ভালো লাগবে। তো আসতে পারো। আর এটা খুব ভালো অপরচুনিটি। Yeah, that's enough. It's a good opportunity that you feel today. When आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ ज्वाइन करके आपको फ्यूचर में कुछ मिलने का सोचा है? হ্যাঁ,
ठीक है, अभी आप कंफ्यूज है, छोड़ दो, आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, प्लीज पास द माइक टू दिस गाय. So I think he might be able to explain a little more better. He's a little talkative as far as I know, right? So yeah, please introduce yourself in Japanese first. Again, and then come back. I'll ask you questions in English. First of all, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Yes, I also know that. Hajimemashite, Jonasu moshimasu. Dojo yoroshiku onegaishimasu. Okay. So Janas Jamatia, right? ये बताओ तबोक, let's go with you in English and then you go in the local language of Congo, right? So how did you get to know about the opportunity with Japanese HR today? Okay. First of all, I have always wanted to work in another country. Close. I have always wanted to work in outer side of the country, but it was not possible because of financial is not good, and my parents also can't afford that. But I am very grateful to get this opportunity, and thanks to our Bubagra and also Dinesh sir and also Navish teacher. Okay. Now, as you said, you wanted to always work, but what made you choose Navish HR? What made you choose to join Navish HR? Because there are other companies as well who provide Japanese opportunities. As you also told me earlier, I guess two of your seniors have already reached Japan and they are currently working. But what made you think that you should be joining Navish HR today? Because of Navish, I heard Navish teacher is super good, and and our sensei Japanese teacher is very good and very sincere. That's why I want to join in this Navish. Yes. So you felt Navish HR is far better than other Yes. institutes who sends to Japan. Thank you. I believe Navish HR will give that in a positive way, hopefully. There are more points that I wanted to know from you is, what is your future plan after reaching Japan, after you learn Japanese language? What do you think that you would want to convey to your future friends or to somebody known to you? Would you like to invite them? Would you like to give them an opportunity? What message would you like to give them so that they also create interest from their side to come and join our system? Because of Navish teacher is, I already said, super good, and they provide also. If you want to go abroad, and they provide this, and come and join Navish teacher. Okay, so thank you very much, Janice, for the information that you have shared from your end, the things that you wanted to share. I know you wanted to share more, but probably you're confused. Probably you're confused and you're not able to say more. But hopefully, next meeting we will have again, next session, once you become expert, and then probably you might be able to motivate more people from your side with your language. Okay, Kulungka, and then bumong ketan mo Sagar di Tripura. Fully cycle na rin ini para boro ngoro baje sopo kya amor kisa nang kogro boy cycle na rin. Ani mungka sagorji Tripura, an parangka sabrungo, kaya angoro paimangkai, nagi bang nabi session saimano, angkai nabi session je pro interview na pro ang call kaika nabi session no, angkai boro call kai response kaika, nang tudi interview ran angkai interview remana na sao, kaya interview berka, kaya boro boy kok salai ajaga headquarter Bengaluru ajaga painai. Ang borok boy malai kan ke interview ro reka interview men pore borok ano call kai sarka select ka. So nini fees of bevero jenang samani aborok ne nang bum picture ja samani nang comfort dangjak na bara bangja bangi phana nang klaiman ohne je want ka. Sir ang to already interview men pore ani kisa financial problem bage ang effort khaimia nai ang one soka je ang thangya nai angkai sanung bai kok samani pore nang ano kisa omok laika ne sar ano subaka tang angkai boana advice khaika angkai kubang ma motivate ba khaika ang je ko demotivate ong tongpro angkai ang phaya ni tongmani tang angkai ang already kaisa jago samtang tongo pro angkai sar no ano phaidi nang kono mungsasuk omong kangkai ang tongo ni sao
आनबाय आं सारबाय थांगै मालायका ओंखाय बहानो कक तरका सारानो नंनाय नायनो कक जदि जाखांगोन तो कक नंनाय तो उनके ताबुक नों तिनी जापानीज HR ताबुक सॉरी नाविश HR ने जो जॉइन किया माने नों ताबुक वन सुबह खाएगा नों फ्यूचर ताम खाने मोटिवेशनल सर बुसु नाभिस जरा एचआर तेरे साकना बुसु जरा तेरे साकना नुहुर नाभिस एचआर कैसा अपॉर्चुनिटी दङ तांगे जे परे तंनायरन नार्सिं परे तंनायरन बागै बाहेर फाताराव जापानाव तांगे आ जागा जेनुइन अमो नाभिस एचआर एजेंट तांगे आ जागानि बरक गोबांमा स्टुडेन्ट रक इन्डियानि थांजाक दङ जापानाव ओमफ्राय बरक अलरेडि सामखाय दङ ओमफ्राय कमप्लिट खायबो फायजाक दं बरक ओमफ्राय 3 बोसोर 5 बोसोर आते कमप्लिट दङ फायजा ओमफ्राय ते बरक आ जागा थांगिते बैसा बरनि प्लानिंग ओमफ्राय सेटल अफ खायनानै आते रक साव ओमफ्राय आ जागाव आसो अमक रिं तामनाय डिउटिनि आ जागा हारवा आसो रिं साव प्लस आ जागा जुदि जापानिज कक संगे मा खांखाय काम के सामने टांगे माना इनके अपॉर्चुनिटी दूंगा बंदे ओके ताऊ निन बुखावल किरमर रहता नों जापाना थांगे कौन दांगनो बा कौन किरमर रहता अब तो करेता इनके जे थांगी फाइनाल बरोनी एक्सपीरियंस बरोक शेयर करेगा तांगे आ जागा कुनो किरिजांना करे आ जागा नाभिस एचआरने ऑलरेडी आ जागा बो टीम दंगो जे जागा नों थांनाय आ जागा ऑलरेडी बरोक नो जॉब निबाय अमक खायनाय माने नों कॉन्फिडेंट जे बरक नो जॉब रिनाय बा नरक नों आ जागा सेफ्टी तंनाय ऑलरेडी प्लेसमेंट जिनिस अमंग जा सिलेंग और तिनी जॉइन खायगा माने प्लेसमेंट इज सेट ताबो नों आरा थांगा के नों किरमर रहता फियर जे किरिमा तो करे आ जागा कुनो तांगे जापान कैसा सेफ कंट्री इनके आ जागा किरेनानि कुनो करे तंगी नि पेरेंट्स अपने कौन दसानी ना आमा बाबू नो माना दसलाय बरंनि तो कॉन्सन बरक ना हंया थांगे पुइलाव माना दं दसलाय का पुइलाव अन बाबू किसा मong का बकाय तांगे इनके अंदरा sorry chen bagai bo ta thangde ni saman kok gaya ko nang ता थांने बन नंग ता खाना मुझे नाम ले मैंने ठीक नो नोंनि नि पेरेंट्स ने अगेंस्ट थांगे नंग ताबो कबो खाए थांगे तो कबांग बा बोरा रखो तिनी चिने के ब्रास करो चलिए इसको हम हिंदी में कर देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सबको समझ में आए कि त्रिपुरा में ऐसा हो गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको कांटेक्ट किए हैं कांटेक्ट करने के बाद ये बोलता है कि मेरी मम्मी नहीं मान रही है मेरा पापा नहीं मान रहा है करके और सेकेंडरी तो फीस का जो प्रॉब्लम है वो तो सेकेंडरी आता है पहला प्रॉब्लम तो यही आते हैं कि माई पेरेंट्स आर नॉट अग्री क्योंकि लोगों को डर है कि वहाँ दूर अलग देश में जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो है कि नहीं even your father had the same issue your parents also had the same issue but you could recover you could overcome that तो ये सब ओवरकम तभी कर सकते हैं जब हम लोग कुछ चाहते हैं जब हम कुछ करना नहीं चाहेंगे when we don't have that aim in life हम ये सबको ओवरकम नहीं कर पाएगा तो हमारा गुजारिश यही है हर माँ बाप से कि आप जो भी हो डिसीजन अपने बच्चे के लिए है अपने बच्चे को फ्यूचर के लिए है हम चाहे त्रिपुरा से बैंगलोर आके काम करें या हैदराबाद दिल्ली कहीं भी जाके काम करें काम तो करना ही है इनकम तो करना ही है एंड वी कैन नॉट ओनली डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट जॉब्स अलोन इन त्रिपुरा अभी त्रिपुरा में गवर्नमेंट भी और कितने लोगों के जॉब देंगे अब बताओ आप लोगों के क्लास में कितना लोग थे पास होने वाला आप लोगों के साथ BSc GNM नर्सिंग मिला कितना लोग थे आप लोगों के क्लास में 59 मतलब 60 estimated 60 just from your class there are other colleges 60 उधर से भी 60 होंगे आपका सिर्फ BSc नर्सिंग के बोल रहे हो या GNM also only BSc मतलब hundreds of people let's say GNM 60% students passing out every year हर साल एक ही कॉलेज से 120 लोग पास होके जाते हैं and there are 20 to 50 colleges all together on the nursing colleges जिसमें से अगर हम पकड़े तो every year 1000 plus students पास होते हैं from GNM and BSc nursing अभी इमेजिन करो इंडिया गवर्नमेंट खुद जॉब नहीं दे पाएंगे पूरे 1000 लोगों को एक साल नर्सिंग के लिए जितना हॉस्पिटल्स क्यों न खोल ले एक हॉस्पिटल में 4 से 5 से या मैक्स टू मैक्स 10 नर्सेस रख सकते हैं
बट उसमें से भी 2 बीएससी होगा, 4 जीएनएम होंगे। तो आप लोग इमेजिन करो कि अगर आप सब 1000 लोग हर साल जो पास होते हैं गवर्नमेंट जॉब के पीछे पढ़ते रहोगे, तो डू यू थिंक दैट यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी दैट योर नंबर इज गोना कम बैक? पॉसिबल है? आप लोग बताओ, क्योंकि ये साल का 1000 लोग पास हो गए, ठीक है, 1000 में से गवर्नमेंट कुड ब्रिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ 200 पीपल या 280 पीपल पकड़िए, 280 पीपल नाउ माइनस कर देंगे तो वी स्टिल हैव 720 पीपल समथिंग, राइट? ये साल का 720 रह गया, अभी अगले साल का फिर अनदर 1000 प्लस पीपल हैज कम आउट, इसको जोड़ा तो 1700 हो गया। ये जोड़ते जोड़ते अभी त्रिपुरा में 5000 से ज्यादा नर्सेस पड़े हैं जो बिलो 30 इयर्स की एज पे है। फिर भी अभी भी लोग वही सोच के बैठे हैं कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब ही, हम लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बट अब लोगों को भी गवर्नमेंट के ऊपर तरस आना चाहिए कि गवर्नमेंट भी और कितने लोगों को जॉब देंगे, है कि नहीं? इट्स नॉट, आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग in the support of government, I'm talking about the humanity, about the survival that you need to think in life. Today, even if I don't have a job, I should get somewhere. Even if I don't get the government job, I should get some job somewhere to survive. Then what is the use of your education when you're not able to earn it? A nurse, in earlier days, nurses were confirmed, nurses used to have a confirmed job. Even today, we have a confirmed job for nurses in private hospitals, but people tend to ignore the private hospitals running behind the government jobs. As I said, government भी कितना opportunities निकाल पाएंगे आपके लिए. So similarly, give an opportunity to those people who are eligible, right? Who got selected. Okay, ये साल they got selected. Maybe I was not eligible to get selected in the government sector. Let me also try in a private sector. बोल के आना चाहिए हम लोगों को. आप लोगों को बैच में से कितना लोग जॉब करते होंगे आप? एनी आइडिया? हाँ, तो क्यों? क्योंकि ये आगे बढ़े हुए हैं, ये सोच है कि हम गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं भागेंगे, कहीं से भी कहीं ना कहीं तो हम लोगों को जॉब करनी ही है। अभी हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे या नहीं बोलेंगे कि इंडिया में जॉब करो या बाहर में जॉब करो, आप कहीं भी करो, व्हाट मैटर्स इज द इनकम। Everybody in today's world works with any company or do any work for the income source, right? बिना income देखेंगे, if you don't get a money, obviously you're not going to do something. And money is the thing that we want to earn today. And that is what gives us a livelihood. That is what gives us a survival. Without earning, tomorrow you might go hungry. Okay, you have a father, you have a mother today. Who's going to feed you? Once they're gone, who's going to feed you after that? That is what we have to think. Instead of sitting just idle कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए और गवर्नमेंट नहीं अप्लाई करते रहूंगा या कोई आपको बुला के जॉब दिलाएगा, वो सब कुछ छोड़ो। मैं बोलता हूँ भाई लोग बहन लोग जो भी एजुकेशन खत्म करे हैं, एक्सप्लोर योरसेल्फ टू एवरी एक्सटेंट, not just in one sector, try in every sector. Like you had been working with industrial nurse, you guys are freshers. There are hospital nurses. So you could work with industrial nurses because you have that point where you wanted to work somewhere to earn for yourself. I know कि industrial nurses में आपको ज़्यादा सीखने को नहीं मिलते, but still you had to explore your so you have to explore your experience to gain, to earn something, which is where you guys came out of. So similarly, what do you think you should be conveying your friends, your families, or your juniors, your seniors who had passed away, not passed away, passed out, okay, of the nursing courses so far? What message would you like to convey? What do you think would motivate them to join any company, not only Navish? I would not say just join Navish. You can also join anybody and don't just wait for the government, is what I wanted to request everyone. हम लोग कुछ बोल सकते हो, कुछ बोलना चाहोगे अपने क्लासमेट्स को या फिर अपने बड़ा भाई बड़ी बहनों को, जो आप लोगों से, तो आप जिस कॉलेज में पढ़े हैं, आप लोगों से भी तो बहुत सारे सीनियर्स रह चुके होंगे, तो वो सीनियर्स लोग आपको लगता है क्या वो सब जॉब कर रहे होंगे? अभी बहुत सारे तो ऐसे खाली पड़े हैं। अभी देखो, आप इनके साथ नहीं आते तो शायद ये आज अपॉर्चुनिटी नहीं मिलते। नाविश कौन है ये भी नहीं पता रहे। नाविश कौन है नाम तो सुन लेता, बट
अपॉर्चुनिटीज क्या है ये नहीं पता रहता जब तक आप खुद एक्सप्लोर नहीं करते। आप तो आए एक दिन के लिए, एक दिन में आप, एक घंटे में आप इम्प्रेस हो गया, यस दिस इज व्हाट इट इज। सो टिल द टाइम यू डोंट एक्सप्लोर थिंग्स यू विल नॉट नो व्हाट इज इनसाइड। सिर्फ दूर से देखने से पता नहीं चलता वो कितना खूबसूरत है, कितना बदसूरत है। सो सामने जाओ, अच्छे से समझो, अच्छे से परखो, तब जाके हम लोगों को समझ में आता है कि ये एग्जैक्टली हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या होती है। दिस इज व्हाट गॉट यू इनसाइड, राइट? इम्प्रेस विद इन 1 hour। See, she just came in randomly along with this guy, but yeah, later she got to know things, and then she was explained with things. She did not take a second thought, or she have taken a second thought a little bit, but not too much, because she did not want to lose the opportunity. This is what you told me the other day also when you met me, and yeah, I met you the first day when you came in. So I'm not sure if you were impressed by my words or by the words of the Navish type, though. But no matter, you were impressed was the main factor that matters. So I'm really happy कि आज हमारे त्रिपुरा से पहले 3 व्यक्ति नाविश एचआर को ज्वाइन कर पाए हैं। होपिंग कि अगले बहुत सारे और स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स जो जीएनएम, बीएससी, एएनएम इज ऑल्सो कंसिडर्ड, जो नर्सिंग कंप्लीट कर चुके हैं, जो अप्लाई करना चाहेंगे। आप लोगों को कुछ तकलीफ है तो रास्ता ढूंढो, रास्ता ढूंढने से सब कुछ मिलते हैं। बस एक जगह पे सोच अटके मत रखो कि ये ना सोचे कि हम लोग तो ये कर भी नहीं पाएंगे, शायद हम लोग यहाँ जगह फेल हो जाएगा। पहले ट्राई करके देखो, अगर दिल में चाहत है तो हम जरूर कर पाएंगे, एंड हम कर सकते हैं। ये सोच रखो कि हम कर सकते हैं, और अपने बच्चों को जितना हो सके अब्रॉड, जापान भेजो या जॉब के लिए भेजो, तभी जाके हम लोग डेवलप होंगे। आप एग्जाम्पल क्या देना चाहोगे? एक लास्ट 1 एग्जाम्पल, विल नॉट टेक मच टाइम एनीमोर, बहुत लंबा हो गया है। आप लोग को भूख लगे है क्या? हंग्री? खा लिए? अच्छी बात है। ये नाविश एचआर खाना दे रहा है अच्छे से, रहने का अच्छा है। हाउ इज द बेडरूम, हाउ इज द पीजी रूम? वेरी गुड। मतलब लाइक जापान organized, like Indian organized? Just asking if you just wanted to check if you are happy or not. सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए हाँ मत बोलना, so that till the time you don't express, things are not going to get resolved. अगर कुछ तकलीफें हैं तो जरूर एक्सप्रेस करिए। तो सिमिलरली जो त्रिपुरा में है, बहुत सारे लोग कांटेक्ट किए हैं हम लोगों को ये पूछने के लिए कि अगर पैसा देना पड़ रहा है तो हम नहीं जाएंगे। अब ये सोचो कि ये जो पैसा ले रहा है किस लिए लिया जा रहा है। 6 महीने आप लोगों को बिठा के खिला रहा है, कोर्स दे रहा है जापानीज का लैंग्वेज, जो द कॉस्टलीस्ट ट्रेनिंग लैंग्वेज ट्रेनिंग होता है इन इंडिया। जापानीज लैंग्वेज इज द कॉस्टलीस्ट लैंग्वेज टू लर्न। फिर भी इसी को लेके नाविश एचआर ने इसी को एक पैकेज बनाया है। ये पैकेज में आप लोगों को 6 महीने रहने का, खाने का, प्लस जापानीज लैंग्वेज सीखने की मौका मिल रहे हैं। और उसके बाद then you get the visa cost will be included there, and your exam visa exam cost also will be included there, and one way ticket to Japan is included there. अगर आप दूसरे कंपनी के साथ भी जाओगे, even they will have the similar thing. No company can send you for free, no company can give you a visa for free. अगर वो लोग बोलते हैं कि आज हम आपको फ्री में ले जाएंगे, तो I give you damn assurance, surety कि वो आपका सैलरी में से डबल कटेगा, एंड वो होगा ही होगा। अभी ये जो है अपॉर्चुनिटी, आप लोगों को डरे नहीं रहना है कि 3 लाख देना है, 4 लाख देना है। पहले समझो कि ये 3 लाख को किस तरह भाग किया जा रहा है और किस तरह आप लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी दिया जाता है पेमेंट करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, द बिगेस्ट पॉइंट इज द फ्लेक्सिबिलिटी दैट इज गिवन टू पे योर फीस। हर जगह आप जाए, फ्री में तो कुछ नहीं मिलते। आप यहाँ से जेपी नगर जाएंगे, चल के जा सकते हैं तो फ्री हो सकता है, बट चल के जाने के लिए आपके पास ताकत नहीं रहेंगे, तो बस में तो चल के जाने पड़ेंगे। बस तो आपको फ्री में नहीं देके जाए। सो सिमिलरली लेट्स कंसिडर दैट एज एन एग्जांपल कि हम लोग अभी नाविश एचआर के थ्रू जापान जा रहा है, एक नौकरी भी कंफर्म है, जॉब इज ऑल्सो कंफर्म बिफोर आई ज्वाइन द ट्रेनिंग इटसेल्फ, एंड जो फीस है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है वो सब भी आप पूरा अच्छे से इंक्वायरी कर लो, ताकि आपको कोई सेकंड डाउट ना आए। आपको कुछ डाउट है अब तक? आपको कुछ डाउट है? You don't need to have any doubt though, but you guys don't have any doubts, right? So, you happy?
Really happy? Happy? ठीक है. So not taking any more time. I think we can wind up. If you guys have any questions, any doubts, yeah, if somebody can explain about the benefits, Madam is here. Just can you come a little closer? Then I would say the Japanese benefits. Now, as this student has come joined your Navish HR, what benefits do you think? Or would you like to express them or explain this guys that these are the benefits that Japan or your Navish HR will be giving to this guys? Yeah, you need to explain in Hindi, English. Yes, after they reach Japan. So, like, basically, guys, once you get the job, like, I will directly tell that the range of the salary will be low compared to India. So, and also, like, a cost of living is not so high. It feels like high, but it's not so high. 60 to 70% of whatever the salary you earn, you can directly sell it. Okay, that is one benefit. And also, like, you will be learning hygiene and discipline, more about discipline, and also the work culture and the values. Everything you will be learning from that. That is what I feel. And of course, if anyone agrees or not, everyone will be working for their salary to take care of the family. And also your career will develop. If you have worked abroad, your career portfolio, it will definitely like 100x. It will be high. That's what I wish to tell. So this is small questions. As per the discussion, just for the clearance, so that the public also gets to know that Navish HR is always with these candidates when they reach Japan. How are you going to think you will be able to help them in terms of accommodations? Would the company be providing accommodations, or would they have to arrange their own accommodations? No, How would be the accommodation expenses? assistance will be from our end. Okay. The assistance will be Yeah, given. accommodation assistance will be there, and for traveling also, they will assist you. In fact, will drop you to the airport. No, it's like not going to, not while going, I'm talking while once the reach. Once they reach also, Yeah, they once will they be reach providing Japan. the accommodation assistance. Yes. So, so okay. ओके सो गाइज आप लोगों ने सुने होंगे कि नाविश एचआर की तरफ से ये लोग आप लोगों को मदद करेंगे. दे विल असिस्ट यू टू गेट अकोमोडेशंस, फूड एंड स्टे जो है, बट या कॉस्ट जहाँ भी रहता है अपना ही होता है. सैलरी होता है सम 3 लाख येन, 3 लाख येन पर मंथ. Yeah, it's perfect. Indian rupees में will come around 150, 1.3 to 1.5 an estimation. 1 से 1.5 लाख रुपए की आपकी इंडियन रुपीस में सैलरी होंगी. क्योंकि आपको अभी येन में बताऊंगा तो शायद आप लोगों को समझ में ना आए, बट व्हेन वी कन्वर्ट द सैलरी जो वहां मिलने वाले हैं आप लोगों को, तो 1.20 से लेके 1.50 तक के आप पकड़ लो. 1.5 लाख के महीने की, नॉट साल की. ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज. ये महीने की सैलरी है 1,20,000 से लेके 1,50,000 तक, डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज और डिपेंडिंग ऑन द प्लेस वेयर यू वर्क. तो उसमें आई एम नॉट श्योर अबाउट द इंसेंटिव्स. विल देयर बी एनी चांसेस ऑफ गेटिंग इंसेंटिव्स और एक्स्ट्रा सर्विस चार्जेस? ओके, नो एक्स्ट्रा वर्क आवर्स आल्सो. हाँ, अगर ओटी करता है, अगर आप ओवर टाइम करता है तो आपको एक्स्ट्रा मिलने की चांसेस है और मिल जाएंगे. ऐसा नहीं है कि आपके काम का कुछ मिलेगा नहीं. तो ये मैडम ने जो समझाया है, आप लोग जो सैलरी मिलते हैं वो 70 to 80% सेविंग्स में आप लोग डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग इज नॉट रियली हाई, डिपेंडिंग ऑन द सिटीज. अगेन टोक्यो वगैरह तो बहुत महंगे हो सकते हैं, बट अदर सिटीज और अदर स्टेट्स इन जापान, there will be a place where you can save more money. जो आप जापान में जाके 50 to 60,000 मिनिमम आप सेविंग्स कर सकते हैं पर मंथ. और अगर आप लोग ग्रुप में जाते हैं तो 4-5 लोग एक ही रूम में रह सकते हैं. एंड देन हाँ, तो अगेन उसमें भी आप लोगों का बचाव हो जाता है. अगेन when similar people stays from the same state, we can stay together and then we can do more savings. It's all about savings. It's all about making money once you reach Japan.
अब 5 साल काम करो, जितना कमा सकता है कमाओ, 20 लाख सेविंग्स करके आ जाओ, त्रिपुरा में आके अपना हॉस्पिटल खोलो. So I mean, not just saying, but yeah, if you have a business mind, if you want to do something, but you get to learn something. अब जब बाहर जाओगे तो जापान में जो डेवलपमेंट है, अब वहाँ का डेवलपमेंट को सीखिए. आप इंडिया में आके सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, इंडिया के कोई भी जगह पे आके आप वो चीज कर सकते हैं, एंड यू कैन टेक दैट एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. बट पहले आप लोगों को उनके लिए अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने होंगे. सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होगा. So बहुत बहुत धन्यवाद. We have taken a long time on the discussion on Navish HR, and I'm really happy for all the supporters. जिनको जो भी inquiry होंगे, we are reachable at 8088028601. I would suggest you to drop me a WhatsApp message rather than calling. क्योंकि कॉल हर बात रिसीव करना मुश्किल नहीं होता है, बट व्हाट्सएप मैसेजेस में एज सुन एज हम आपको मैसेज देखेंगे, हम आपको तुरंत रिप्लाई कर देंगे. आप लोग एडीसी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से अप्लाई कर सकता है, नहीं तो आप हमारे तरफ से भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं बाय कॉलिंग और बाय टेक्सटिंग इन व्हाट्सएप एट 8088028601. थैंक यू वेरी मच. बाय.